प्रार्थनाया वयम् अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। ये जनाः स्वेषां वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति ते कृपया उद्घाटयन्तु। अहं लोकयाने अस्मि, अतः न अस्तु, ये जनाः शक्नोमि। कर्तुं शक्नुवन्ति ते उद्घाटयन्तु। गतवर्गे केनचित् मां पृष्टमासीत् यत् प्रत्येकस्मिन् शब्दस्य यदा व्युत्पत्तिः भवति तस्मिन् प्रत्ययानाम् आवश्यकता अस्ति न वा। मया तस्मिन् समये उत्तरं दत्तं यत् यथा वयं निजन्तानाम् अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये अहं पुनः कारयिष्यामि। अतएव किञ्चित् अभ्यासाय एव तस्य एकवारं पुनरावर्तनं कुर्मः। प्रकृतिपदं प्रत्ययः। किं नाम वाक्यं? कोऽपि वदति वा? वाक्यम् इत्युक्ते किम्? ये जनाः नूतनाः सन्ति ते कृपया उत्तरं ददतु कृपया। ये जनाः पूर्वमेव पठितवन्तः, मया सह व्याकरणम् अपि अधीतवन्तः, ते कृपया इदानीम् अन्येभ्यः अवसरं ददतु कृपया। ये जनाः नूतनाः सन्ति ते अहम् इच्छामि ते कृपया भागं वहन्तु इति। अनेक शब्दान् योजयितुम् अर्थं सहित वाक्यं सामान्यरूपेण किं वक्तुं शक्नुमः? चम्पा भगिनी वक्तुम्। एकतिङ् वाक्यं। उत्तमम्। एतेन कारणेन मया उक्तमासीत् ये मया सह पठितवन्तः ते कृपया उत्तरं मा ददातु। अस्तु, एकतिङ्गवाक्यम् इति भवती उक्तवती खलु। एतेन किं बुध्यते? वाट् डस् इट् रेफर् टु? एकतिङ्गवाक्यम्। इदानीं मैथिली भगिनी किमपि मा वदतु। भवती यत् उक्तवती एकतिङ्गवाक्यम् इत्युक्ते किम्? Just try to guess. Maithili Bhagini has told Ekating Vakyam. What can be the reason for it? Only Kriya can define the Vakya, if we say. Exactly. Vakye न्यूनाति न्यूनम एकम क्रिया भवेत्। यदा अहम केवलं रामः, अश्वः, गोः, बालकः इति क्रमेण स्थापयामि चेत् एतैः पदैः वाक्यस्य निर्माणं न भवति। न्यूनातिन्यूनम् एका क्रिया भवेत्, एकं क्रियापदम् आवश्यकम्। पदयोः मध्ये अन्वयः अपि आवश्यकम्। अन्वयः इत्युक्ते अत्र रिलेशनशिप। कः कर्ता, कः पद, किं कर्मं, करणं किं, संप्रदानम् अपादानं किम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। यावत् वयं न ज्ञातुं शक्नुमः यत् अनयोः मध्ये अथवा एतयोः मध्ये कः सम्बन्धः, तावत् पर्यन्तं वयं न ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि
पदम इत्युक्ते शब्दानां वाक्यम इत्युक्ते शब्दानां समूहः। पदम अर्थवत् भवेत्, किंचित अर्थं बोधयितुं शक्नोति इति। वाक्ये यदा पदानां समूहः भवति चेत् वाक्यस्य अर्थः अपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, पुनः किं नाम पदम? Can anyone say किं नाम पदम? What is a padam in Sanskrit grammar? वर्णानां समूहः पदम्। पदम वर्णानां समूहः इति पदम न भगिनी, भारती भगिनी न। सुबद्धम् अन्येभ्यः तिगन्धं योजनेन पदम् इति उच्यते। सुप्तिगन्तं पदम इति यथा भगिनी उक्तवती, सुप्तिगन्तं पदम इति एतत्तु एकं सूत्रमस्ति, पदस्य व्याख्यां करोति, परन्तु अस्य को अर्थः? What does it mean? सुप्तिगन्तं पदम। सुबन्त अथवा तिगन्त एतस्य अर्थः सर्वे जानन्ति वा? सुबन्त किं, तिङन्त किं? सुप्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति सुबन्धपदं नामपदम्। तिङ् प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति क्रियापदं तिगन्तम्। उत्तमम्। सुप् इति कश्चित् प्रत्ययः, तिङ् इति कश्चित् प्रत्ययः। सुप् प्रत्ययः यस्य अन्ते अस्ति सः शब्दः सुबन्तः इति कथ्यते। अस्माकं व्याकरणे अथवा संस्कृतभाषायां 21 सुप्रत्ययाः सन्ति। वयं विभक्ति प्रत्ययाः वदामः खलु, सु औजस् अम् औषस् ताभ्यां भीस्, एते प्रत्ययाः सन्ति। पुनश्च तिङन्त तिङ् प्रत्ययः, कति तिङ् प्रत्ययाः सन्ति? 18। 18। हरि ओम महोदय। हरि ओम महोदय, स्वागतम्। 18 तिङ् प्रत्ययाः सन्ति। तिङ् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति सः शब्दः तिङन्त इति नाम्ना ज्ञायते। So a shabda to be qualified as a pada has to be either have a sup at the end or ting at the end, without which it cannot be considered as a pada. And apadam na prayunjita. अस्माकं तार्किकाः वदन्ति अपदं न प्रयुञ्जीत, यावत् पर्यन्तं शब्दस्य पदे तत्र परिवर्तनं न भवति तावत् पर्यन्तं वाक्ये अस्य उपयोगः न भवति। यदा वयम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, राम इति कश्चित् शब्दः, राम इति प्रातिपदिकम् इति वयं वदामः खलु, परन्तु अस्य वाक्ये उपयोगः न शक्यते। वयं तेन सह सुप् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः। प्रथमा विभक्तौ सु इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति, सु, रामः इति पदं भवति। इदानीं रामः इति पदस्य वाक्यप्रयोगः भवति, केवलं राम इति शब्दस्य न। So what I wanted to say is, so long as we cannot add a thing or a supratyaya to a shabda, we cannot make it a padam, and till the time we make it a padam, we cannot use in a sentence. It is as simple as that. सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। एतस्मिन् कापि शङ्का नास्ति? नास्ति महोदय। आं महोदय। संस्कृते पदं द्विविधं, यथा भगिनी उक्तवती, सुबन्तं तिङन्तं। सुप् यस्य अन्ते अस्ति सः सुबन्त, तिङ् यस्य अन्ते अस्ति सः तिङन्तम्। एकनिमिषं किञ्चित् शेर् करोमि।
यतोहि अयं विषयः मया तद्धितान्तानां वर्गाणाम् आरम्भे एव स्वीकृतं, पुनः एकवारम् अभ्यासाय अहं स्वीकरोमि। अस्माकं पुनरावर्तनम् अपि भवति। यथा पदं द्विविधं भवति तथैव प्रकृति अपि द्विविधा भवति। प्रकृति इत्युक्ते किम्? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? प्रकृति आङ्ग्लभाषायामेव वदतु। मूलशब्दं रूट् रूट Root of a noun or a verb. Verbs. उत्तमम्। The root word of a noun or a verb. Thank you. Excellent. परन्तु अत्र द्रष्टव्यं सुबन्तानां प्रकृतिः अस्ति प्रातिपदिकम्। तत्र सुबन्तम् अस्ति, तस्य प्रातिपदिकम् इति प्रकृतिः भवति। सो राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तेन सह सुप् प्रत्ययस्य योजनेन रामः इति पदस्य निर्माणं भवति। ओके, परन्तु तिङन्तपदस्य प्रकृतिः भवति धातुः। गच्छ इति धातु अस्ति, तेन सह तिङ् प्रत्यययोजनेन गच्छ इति धातु नास्ति, परन्तु आदेशः अस्ति गम् धातुः। तर्हि तिङन्तेन प्रत्यये योजिते सति गच्छति इति रूपस्य निर्माणं भवति। पुनः पठ अस्ति चेत् पठति भवति, लिख अस्ति चेत् लिखति भवति, तादृशमेव रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तर्हि पदं द्विविधं, प्रकृतिः अपि द्विविधा, परन्तु प्रत्ययः सप्तधि प्रत्ययाः सन्ति। सप्तधाः प्रत्ययाः सन्ति, क्षम्यता। एते सनादि प्रत्ययः, विकरण प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, सुप् प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः तथा तद्धित प्रत्ययः। So there are 7 types of pratyayas. Okay. एतेषु सुप्, स्त्री तथा तद्धित प्रत्ययः नामपदे अथवा प्रातिपदिकेभ्यः युज्यते। Sup, Stri and Tadhit pratyayas are added to the Pratipadikam or the root word for the Namapadams. And Vikarana pratyaya, Ting pratyaya and Krut pratyayas are added to Dhatu. Vikaranam, Ting and Krut. And Sanadi is a peculiar pratyaya. They are attached to both Dhatus as well as Pratipadikam. But in return, they always give a new dhatu. Sarvada nutanasya dhatoho nirmanam bhavati etesham yojanena. Vayam adau api patitavantah anich pratyayah bhavati, san pratyayah bhavati. यथा एते अस्माकं व्याकरणकक्षा प्रचलति अस्ति, तर्हि क्यङ् प्रत्ययः अपि अस्माभिः दृष्टम्, क्यच अपि अस्माभिः दृष्टम्। एते 12 सनादि प्रत्ययाः भवन्ति। या तेषां विभोगः भवति, येभ्यः सह विधीयन्ते, सर्वदा नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति। When they are attached to, whether they are attached to a pratipadikam or a dhatu, they always give a new dhatu in return. Okay, अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? So here what I have read is Sup, Stri and Tadhita are attached to the Pratipadikam. Vikarana, Ting and Krut are attached to the Pratipadik and Dhatu. And Sanadi are attached to both Pratipadikam as well as Dhatu. मुझे सनादि समझ में नहीं आया। सनादि प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों प्रातिपदिक और नाम पद के साथ में भी जुड़ते हैं और धातु के साथ भी जुड़ते हैं, और वो हमेशा एक नया धातु का निर्माण करती हैं। प्लीज एग्जांपल दीजिए ना। अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, निजंत वही पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग निजंत बोलते हैं, सन्नंत बोलते हैं, वो सनादि प्रत्ययों से ही बने हैं। ओके, थैंक यू। सन
आदि प्रत्ययः सन् प्रत्यय प्रथम अस्ति अनेन सनादि प्रत्ययः इति कथ्यन्ते सन् क्यङ् क्यच काम्यच णिच एते प्रत्ययाः भवन्ति 12 प्रत्ययाः भवन्ति सो यथा भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति धातुभ्यः चतुर्विध प्रत्ययाः युज्यन्ते सनादि प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः विकर्ण प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययः so 4 types of pratyaya are attached to dhatu which includes sanadi pratyaya krut pratyaya vikarana pratyaya and ting pratyaya now sanadi pratyayas we will see as I have already told they give a new dhatu every time they are attached for example just we are going to learn today nijanta णिच् प्रत्यय यदा तस्य योजनं भवति पठ इति धातु अस्ति तेन सह यदा णिच् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः तर्हि पाठि इति नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति this dhatu is totally a new dhatu and it is not told in the Paniniya dhatu patha आहत्य द्विसहस्र धातवः पाणिनि धातु पाठे उक्ताः अथवा पठिताः सन्ति ते सर्वे धातवः औपदेशिक धातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते so whatever the dhatus are mentioned in the Panini dhatu patha are called aupadeshika dhatu and which are not mentioned in the dhatu patha which are been generated by us by adding some sort of pratyayas which are called sanadi pratyayas are called sanadantya dhatavah अथवा आतिदेशिक धातवः औपदेशिक आतिदेशिक सो भवादयो धातवः इति नाम्ना औपदेशिक धातुना धातु संज्ञा भवति so those dhatus which have been listed in the Paniniya dhatu path original have been or shall be used in the prakriya by having a sutram called bhuvadayo dhatavah bhuvadayo dhatavah the first step is to make a dhatu sanya and similarly that atideshik dhatus have that dhatu sanya called sanadantya dhatavah so what we are going to learn today and in our future classes called sanadi pratyaya san api pratyaya asmabhi patitavyam bhavati so sanadi san and णिच् are also called atideshik dhatu and sanadantya dhatavah etena sutrena etesham dhatu sanya bhavati so why I am telling you the dhatu sanya is important just because we have just learned that 4 types of pratyayas are used in a dhatu. So first we have to know what is a dhatu. So Rama is not a dhatu. Parantu Ramu Kridayam is a dhatu. So how do we differentiate between Rama and Ramu Kridayam? So when I am saying Rama, it is a pratipadikam. It is not a dhatu. But when I say Ramu Kridayam, so bhuvadayo dhatavah anena dhatu sanya kriyate. Then the prakriya starts. Bhuvadayo dhatavah. First step in the prakriya. एतावत् पर्यन्तम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय एतस्मिन् कापि शङ्का नास्ति खलु? न. This is a basic thing. The entire Panini grammar is based. Right? The relationship between Prakruti and Pratyaya, and they are both combined together to form a pada. And the entire formation and the relationship between all three are given in the Panini Ashtadhyayi. So Adhyaya 3, 4 and 5th are
all pratyayas have been told in the Panini Dhatu Patha. Sorry, Panini Ashtadhyayi. So in the third adhyaya, all the pratyayas related to dhatus are told. Medalibikurta pratyayas, adnik pratyayas. And in the fifth and sixth related to pratipadikam. Oh. Sorry, 3, 4 and 5th is pratipadikam. Okay. And 6th and 7th is the total prakriya related. How this prakruti and pratyayas are added to form a padam. Three, 4 and 5 are for pratyayas. 6, 7 and 8 are for the prakriyas. Okay. This is just if you want to. I have used this as a for the Tadhitanta. So I just wanted to get into the root. So what is the relationship? So when we use a subanta or a namapadam, right, to be pratipadikam to be specific, 3 types of pratyayas I've used: stri, sup, and tadhita pratyayas. Okay. And for the dhatu, it's called krut, sanadi, vikarana, and ting pratyayas. 4 types of pratyayas are there. So I'll go a little bit deeper into this. Pratipadikam plus 3 pratyaya is again a pratipadikam. For example, aja or a male goat. If I as a stri pratyaya called tap, so it becomes aja, female goat or a she goat. But still it is a pratipadikam. So if I use a sup pratyaya after that, then only I can use that in the vakyam. Then only it becomes a padam, not before that. Okay. Similarly, this is the all tadhita prakriyas I have explained here, how a pratipadikam is changed into tadhita and stri and again a sup. So if you want to go into the details, please follow the tadhita initial classes, class 1 and class 2. So far everyone has been clear about the relationship between the pratyayas, prakruti and padam. That is what I wanted to emphasize on this class. Do you have any doubt why these are this and these are not that? Don't whatever I have written, because that was tadhita related class. एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति? धातुना सह यदा कृत प्रत्यय. I do have. Yes, please go ahead. I do have a doubt in three Yeah, please. pratyaya. You are telling like aja with aja is again pratipadikam. Pratipadikam. Yes. So how can like after yojana krutva nantara etat three pratipadikam बन जाता है की पोட்டிருக்கேன் जी. जैसे हम लोग ने तद्धित में क्या पढ़ा था, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती. पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती हम लोग ने डायरेक्ट ऐसा पढ़ा था, है ना? परंतु the actual process is what? Parva is we always make. அந்த 100 பை இருக்காங்க. Please mute. So first we make a pullinga shabda. Parvatasya apatyam puman. Parvata. Parvata. Tena saha gim pratyaya yojayama. Im ityuste stri pratyaya asti. So there are some pratyaya which are giving a akara. There are some pratyaya which are giving a dirgha ikara. And 1 or 2 pratyayas we have an ukara like vadhu. So in the nadi shabdavat bhavati. Yeh pratyaya nadi shabdavat bhavati. When we are nadi, nadi. Similarly, parvata plus gimp is called parvati. Parvati itself is a pratipadikam.
then we can use Parvati in all 7 vibhaktis, 7 into 3 forms, 21 forms. Okay? So अवगतं यावत् महोदय। यावत् पर्यन्तं सुप प्रत्ययस्य योजनं न भवति तावत् पर्यन्तं तस्य वाक्ये प्रयोगः न भवति. We have to use a have a sup pratyaya. Even for the avyayani, these are all namapada, subanta but their pratyaya has been deleted. Okay. So this detail about pratyas where we can get, because I do not know any pratyaya. What you have taught, that much only. If you say in pratyaya, I don't know what it denotes like that. It So is, some we will come gradually. We will learn the Panini Kriya. These are all basic. We are in the basics only. so we are just giving a little bit of Panini, so flavoring of Panini Ashtadhyayi. Now gradually we have all come up to learn the Panini Ashtadhyayi. We are preparing ourselves to learn the Panini Ashtadhyayi in different sutrani. What is governed by what? For that we have to ready ourselves, and that is the purpose of this class, that I am going a little bit on the extra and whatever has been given in the book. You will not find anything like this in the book. It is not there. It is not there. If it won't be there. Yes, it is not there. I have seen book. It is not there. It will not be there because it is not their purpose that you should learn this. You should So learn this once you finish the COVID. No, sir. It's for basic for that, no, sir. This is we are preparing ourselves to learn the Ashtadhyayi. Why are this and why are not this? Because whatever process, even I am in the Tadhitas or in the Rijantas and Sannantas I am doing, there I will be marking the sutras. You are not supposed to know the sutranis, okay? But I will be marking the sutrani And to those make numbers, you understand, you should know. to make you understand that this sutra does this sutra does this. So gradually we progress ourselves in the study and Krudantas and Tadhitas. We will understand that how many pratyayas are there, how many krut pratyayas are there, how many tadhita pratyayas are there, and how many ting pratyayas you all know, only 18 pratyayas. Sup pratyayas are 21 pratyayas. But tadhita pratyayas are more, very, very much, very high. Okay. So let us stop this. Do you have any problem understanding this? Etavat parintum kapi shanka asti? Avagatam, Mहोदय. So what I was trying to teach is dhatu. Let us focus on the dhatu related problem. Forget about the pratipadikam. We are not touching the pratipadikam now. Dhatuna saha ye pratyayaha vidhiyante tesham charcham kurmah. Dhatu plus vikarana pratyayah plus ting pratyaya iti kriyapadam. So tigantam. Yatha nrat dhatum svikurmah ya iti kaschita vikarana pratyaya asti and ti iti asmakam tinga pratyaya asti. So nrityati iti rupam bhavati. Final rupa will be nrityati. So ya is a gana vikarana pratyaya. There are two types of vikarana pratyayas. One is a gana vikarana pratyaya and another is a lakara vikarana pratyaya. So if you say in a lit lakar, we have a sya. And if you again little bit go in a further study, we'll have a tas, lut lakare tas pratyaya bhavati. Tas. Bhavita, bhavitaro, bhavitaraha. Aham bhavitasmi. Vargah, shvaha vargah bhavitasti. Saha bhavita. If you note that I always write shvaha vargah bhavita. So bhavita is a lut lakara. It is not going to happen today. It will always be tomorrow onwards. Anadyatana bhavishyakal. It's called anadyatana bhavishyakal. Not adyatan.
अद्यतन अस्ति चेत् सामान्य वयं लुट् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः, परन्तु as we proceed further in our studies, we have to differentiate, or we have to gradually use the specific kala as we are supposed to use for like lung lakara, lang lakara, as well as lit lakara. It will take time, but gradually, wherever you find in the sahityas and everything, at least we should be able to identify which lakar is this. Okay. So, Mahodaya, Bhavishyati is Adyadana Rit Lakara. You can use it as a general, but when you are using a shwa, you are adding a shwa, you cannot technically use Bhavishyati. It is always Bhavita. Vargah Bhavishyati. That is perfect. It can be happen in next 1 hour to next millennium. But Shwaha Vargah Bhavishyati is technically incorrect. Shwaha Vargah Bhavita. So you're talking about the specific day. Yeah, tomorrow. It is tomorrow onwards. Tomorrow onwards. It is not anadyatana. Adyatana nasti. So if I want to say something about the adyatana, it can be after 10 minutes also. So in that case, we cannot use lut lakar. For that, you have to use lrit lakar. So here, if you can see, da dhatu asti, tena saha sya iti kaschita lakar vikarana pratyaya asti. And T called dasyati iti rupam bhavati. Dasyati. They both are ya and sa, both are vikarana pratyayas. One is a gana vikarana pratyaya and one is a lakara vikarana pratyaya. Now, when we use a krut pratyaya in dhatu, we have used tva, tavatu, kuta pratyaya. It's all krut pratyayas. Shatru and shanach also. So they always give in return a new pratipadikam. When we are attaching a krut pratyaya to the dhatu, we always get a pratipadikam. Okay, like shatru, gam plus shatru, gachat iti rupam bhavati. This is a pratipadikam. Then in the pulling, it will gachan, gachanti, and gachat. This is in 3 lingas. Okay, pathan, pathanti, patat, ti rupani bhavanti. All the 3 lingas. Bharti Bhagini, prashna asti. Unmute bhavatu, unmute bhavatu. महोदय कृत् प्रत्यय अस्ति कृत् इत्यस्य अर्थः किं भवति? Nasti, just a name. It is a name given by Panini. Now, ting pratyaya, what does it mean, ting? It is just a ti is the first letter and nga is the last letter. Tittasji, sipthastha, mipvasmas, ta atamjha, has atam dhvam, it vahi mahing. Mahing ngakara aste asti. Adau ti iti asti. So, tip is the ting is the name. So here it is just the name. There is nothing, it doesn't have any meaning. अत्र कृ इत्युक्ते क्रियापदः त इत्युक्ते No. It is not a krutaha. It is not a krutaha, but krut. अस्तु महोदय, धन्यवादः. So this is a small example I used to when I have given while teaching the Tadhitant Shabda. Bhavani Bhagini, ek nimisham pratiksham kurvantu. So if we take a V upasarga, tena saha nam dhatuho pratyak yojanam kurmaha, tatha kata pratyasya yojanam kurmaha. So vinata iti pratipadikam bhavati. Vinata. Tena saha स्त्री प्रत्ययस्य योजनेन वीनता इति रूपं भवति. Vinata. So this is a dhatu. We are getting a new word from a dhatu. How? V is a upsarga, nam it dhatu, kata pratyaya. Vinata. Then for the vinata, we have added a stri pratyaya called tap. It's become called vinata. So for that vinata, we are adding a tadhita pratyaya called dhaka. Apatyam puman vainateya.
And to the Vainateya, we have added a sup pratyaya called sum, it's called Vainateyaha. So Vainateyaha we can use in the Vakyam. So from dhatu, by adding a krut pratyaya, we got a pratipadikam, and by adding a stri pratyaya, we got a striling shabda, and from there adding a tadhita, we got a tadhitanta shabda, and then we have added a supratyaya so that we can use a particular tadhitanta shabda in the vakyam. This is the complete journey of the pratyaya and prakruti. Everyone understands? Shanka asti va? न महोदय. Sure. Parantu hard recipe. So everything when we see or one learn first time, we will get it little bit of tougher. It will take time to soak inside your brain. Go once more to the videos and you will definitely understand it much better. So here dhatu plus sanadi pratyaya, patha dhatu asti. San pratyaya will learn after the nich pratyaya. Patha plus san will give a new dhatu called pipatisha. Pipatishati, pipatishataha, pipatishanti. This is a total new dhatu. And patha plus nich, you give a new dhatu called pathi, pathayati. It's not pathati, but pathayati. Pathati has been given, actually patha has been given by Panini in the dhatu patha. But what if you want to do something, if you want to tell something more? So Panini has given 12 sanadi pratyayas, the addition by addition of which we have a new dhatu as per our requirement. This is called atideshik dhatu or sanadantya dhatu. एतावत् पर्यन्तम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? आम् महोदय. सन्देहः नास्ति खलु? न महोदय. अस्तु, तर्हि अद्यतनविषयं प्रारभामहे. ऋजन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम् महोदय. दृश्यते महोदय. ऋजन्ताः णिच् प्रत्ययः यस्य अन्ते अस्ति सः ऋजन्त. णिच् प्रत्ययः यस्य अन्ते सः ऋजन्तः. आज्ञौ द्वित्राणि उदाहरणानि वयं स्वीकुर्मः. अश्वाः धावन्ति. सारथिः अश्वान् धावयति. धावन्ति धावयति. रामः वनं गच्छति. कैकेयी रामं वनं गमयति. Makes Ram to go to the forest. She doesn't go. Makes Ram to go to the forest. Shishuhu shete. Mata shishum shayayati. Child sleeps. Mother makes the child sleep. So mother is not sleeping, but the child is sleeping. Okay. Here it is very important to identify the original karta, who is actually doing the work. Chhatraha uttarani likhanti. Guruhu chhatraihi uttarani lekhayati. Likhati lekhayati. Guruhu makes the pupils write something. He does not write. He makes someone to write something. Okay, these are called dhavayati, gamayati, shayayati, and lekhayati. Are called nijantaha. Nijantaha. So necha iti pratyayah. एतस्मिन् अणकार चकारयोः लोप भवति. इत् संज्ञा इति नाम्ना काचित् संज्ञा अस्ति पाणिनि व्याकरणे.
यथा णकार चकारयोः लोपे कृते केवलम् इ इति अवशिष्यते. So the new dhatu will have always an ikar at the end. तत्र चोरी, पाठी, कारी इते धातवः भवन्ति. As I have already explained, these are not original dhatus told in a dhatu patha. So these are all atideshik dhatavah or pratyant dhatavah. The original dhatus were called aupadeshik dhatavah. These are atideshik dhatavah. This is chori, pathi and kari are actually the new dhatus. These are called rijanta dhatu. But यदा वयं धातूनां रूपं स्वीकुर्मः तर्हि एते अय इति एतेषु अय इति श्रूयते. पाठयति, गमयति, श्रावयति, नाशयति, अय 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 इति श्रूयते. This is a typical of निजन्ता. अय 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 इति श्रूयते. इत्युक्ते इ प्रत्ययः अय तस्मिन् परिवर्तयति. एकवारं पुनः पृच्छतु भगिनि. महोदय, णित् प्रत्यये इकारः अस्ति खलु, तस्य परिवर्तनम् अय इति भवति. तस्य परिवर्तनं न भवति, प्रक्रिया अस्ति. अहं प्रदर्शयामि, परन्तु परीक्षा दृष्ट्या आवश्यकता नास्ति. For your knowledge, I will write. It's already written. I will show how it is happening. आभारः महोदय. So सामान्य प्रयोगेषु अय इति श्रूयते. पाठयति, चोरयति, कारयति, नाशयति. Wherever you are finding aya, 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 so this is a typical marker for anijanta shabda. Marker. So there are two types of anijanta. So well, let us first see kebhya bhavanti, where these are used. Bhavantah सर्वे जानीयुः ये 2,000 धातवः पाणिनि धातुपाठे उक्ताः सन्ति, ते धातवः 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति. So they are divided into 10 ganas. 10 ganas. Okay. So these ganas are Vadigana, Adadigana, Juhotyaadigana, Divadigana, Svadigana, Tudadigana, Rudhadigana, Tanadigana, Krayadigana, and Churadigana. So all ganas have different vikarana pratyaya or the marker, the identification marker, as we can say. So bhavadi ganasya vikarana pratyaya asti shap. So here also there will be an it sanya wherever possible. Shakarayoho pakarayoho lope krute akara eva avashishyate. Shakara api gacchati, pakara api gacchati. So kevalam a iti avashishyate. Similarly, adadi ganasya vikarana pratyasya lopah bhavati. Ta as dhatu asti tena sah tip pratyasya yojanena asti iti rupam bhavati. There is no vikarana pratyaya in between. परंतु अत्र भवादिगणे पठति अस्ति चेत् पठ प्लस अ प्लस ति पठति इति रूपं भवति. जुहोत्यागणे विकरणस्य अपि लोपः भवति. श्लू इति काचित् संज्ञा अस्ति. श्लू इति लोपस्य अपरं नाम. There is a reason why he has given shlu, and look here. All have different reason for being using. So if anyone wants to know, I have explained this in my Vyakarana classes, so you can just refer to that. We are not going in detail here. So juhotyadi ganasya api vikaranasya lopa bhavati. Hu dhatu asti juhoti iti rupam bhavati. Dadhati, dha dhatu dadhati. Divadibhya shan. दिवादि गणस्य धातुना सह शन प्रत्यय अस्ति. स्वादिभ्य श्नु.
श्नु, तुदादिभ्य श, रुधादिभ्य श्नम, तनादिभ्य उ, क्र्यादिभ्य श्ना, ना चुरादिभ्य निच. निच So for the 10th ganas, for the swartha by default, it's called the nich pratyaya. Sorry, nich vikrana pratyaya. So you have दशमगणः कथं दृश्यते अत्र तु पंचमे स्थाने पांच अस्ति और नहीं, this is the 10th. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तत् भवति. हाँ, चुरादि गणस्य निच इति विकरण प्रत्यय भवति. चुर इति प्रथम धातुः, अतः चुर इति प्रथम धातुस्य चोर इति रूपं भवति. चोरयति, गणयति, मापयति, क्षालयति. So these are aya iti shruyate. Now the difference, how the difference starts. So तस्मिन् गणे अणिजन्ता न भवति, शब्दान् न भवति, शब्दाः न भवति. That is what I am coming to. दशम गणे अपि निजन्तः एव भवति. But there are two types of nijanta. One is called swarthika nijanta and one is called प्रेरणार्थक निजंता. स्वार्थिक, प्रेरणार्थक. So in that place, for example, in the 10th gana, in the churadi gana, the dhatu's original word is retained. So if I use a chorayati, it means to steal. It doesn't mean by default to make someone else steal. So by in here, for example, in a pat dhatu or in the pathati, there is a rupa called pathati and pathayati. So if I know pathati, that the child reads, and pathayati is someone else make him read. Yes. So there is a difference. But in the 10th gana, there is no difference in the rupa. Rupa will be same. Chorayati. Krishnaha navanitam chorayati. He steals the butter himself. Krishnaha mitraihi navanitam. सा किमपि न करोति, प्रेरणां ददाति मित्रं तत्र गत्वा चोरय इति. सो सः चोरयति. कृष्णः चोरयति, सः कृष्णः मित्रैः चोरयति. मित्र के द्वारा चोरी करवाता है, वो खुद चोरी नहीं करता. तो ये अर्थ है, किसके द्वारा किया जाता है. तो दशम गण जो चुरादि गण में स्वार्थ में भी णिच होता है और प्रेरणार्थक में भी णिच होता है. बोथ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट बाकी सभी गणों में केवल प्रेरणार्थक में णिच लगता है. दशसु गणेषु प्रेरणार्थके णिच भवन्ति एव. णिच 10th गण में डिफॉल्ट णिच प्रत्यय होता है स्वार्थ में और प्रेरणा में. बट बाकी 9 में केवल प्रेरणा में होता है. समानमेव. रूपे भेद नास्ति, अर्थे भेद अस्ति. अर्थे भेद अस्ति. हाँ, रूपे को भी भेद नास्ति. संदर्भानुगुणं वयम् अर्थं कुर्मः. संबंधं दृष्ट्वा अवगन्तव्यम्. सो सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थे णिच भवति. सा पाठयति, खादयति, गमयति, नाययति. Here it is chorayati, ganayati, kathayati, kshalayati. This is all 10th ganas dhatu. Chur, gana, katha and kshal. So all 10th gana. These are all different ganas. Nayayati ityukte kim mahodaya? He makes someone else to carry. Oh. Nayati, nayati, nayayati. Nayati nayayati. He brings a bucket full of water by himself and he makes someone else to bring a bucket of water. So nayayati. Ubaypadi asti na ni dhatu.
हाँ न न हाँ उभयपदी अस्ति परन्तु णिजन्तधातवः सर्वदा उभयपदिनः भवन्ति परस्मैपदी सर्वदा परस्मैपदी अपि भवन्ति आत्मनेपदी अपि भवति लेखयति अपि भवति लेखयते अपि भवति खादयति खादयते गमयति गमयते नाययति नाययते बट इन अवर पुस्तकं कोविदस्तरे केवलं परस्मैपदिना रूपाणि एव दर्शितम् अस्ति अतः वयं परस्मैपदी रूपाणि एव स्वीकुर्मः बट बोथ कैन हैपन you can use both there is nothing wrong in it एक कोऽपि निमिषम् नियमः नास्ति अभ्यासेव ज्ञातुं कस्य शक्नुमः। नियमः नास्ति अ, लेखयति लिखयति ऐसा नॉट नहीं लेखयति लेखयते हाँ by पर default it is obvious उभयपदी ये थोड़े ही हो पाठयति गए ना महोदय, किसमें उभयपदी में थोड़े ही हो गए ना, जोड़ीच में काम आएंगे। नहीं आप समझिए पहले मैंने क्या बताया आपको धातु उभयपदी होने की जरूरत नहीं है धातु में जब णिच जुड़ेगा तो एक नया धातु होगा मैंने आपको यही समझाया अभी तक जो नया धातु होगा वो उभयपदी होगा ओरिजिनल धातु नहीं पठ धातु जो है वो अपना परस्मैपदी ही रहेगा परंतु मैंने पाठी जो नया धातु बनाया वो उभयपदी है पाठयति पाठयते सर्वे निजन्ताः महोदय सर्वे निजन्ताः उभयपदिनः भवन्ति उभयपदी न एव भवति कोऽपि दोषा न भवति तत्र कोऽपि न आप कोऽपि किसमें आपने एक वचन में यूज किया ना कोऽपि दोषः नास्ति कोऽपि दोषः नास्ति तत्र उपयोगे सर्वे केयूर्जी भवतः प्रश्नः आसीत् खलु हाँ महोदय you showed some examples somewhere you have used second vibhakti and somewhere we've used third vibhakti yeah so we'll gradually choice? come we'll gradually come each and every sutra I will explain in detail we'll now I am just making you aware of the rupa how does the rupa will come and we will gradually understand why second and why third अत्र पश्यन्तु स्वार्थे तथा प्रेरणार्थे कथं भवति प्रश्नः नवनीतं चोरयति स्वयं चोरयति वा अन्यैः चोरयति so rupam will be same chorayati but in the 10th gana because it is a nishit by default so you have to see the sandarbha krishnah mitraihi navanitam chorayati va swayam chorayati there is no change in the form only change in the meaning depending on the circumstances or the whatever the other padas are present atra pashyantu grahini graham marjayati swayam marjayati parantu grahini sevikaya graham marjayati atrapi marjayati so what we have to see is sevikaya graham marjayati she makes her maid to clean the house she doesn't clean herself she makes her maid to clean the house अत्र सा गृहं मार्जयति स्वयमेव मार्जयति अत्र सेविकया मार्जयति so she makes her maid to clean the house so this is called प्रेरणार्थक this is called स्वार्थिक अवगम्यते वा अनयोः भेदः महोदय स्वयं करोति अन्ये प्रेरयति हाँ कर्तुं प्रायः निजन्ताः उभयपदिनः भवन्ति परस्मैपदिनः अपि भवन्ति आत्मनेपदिनः अपि भवन्ति परन्तु अस्माकं पुस्तके केवलं परस्मैपदिनः रूपाणि भवन्ति अत्यनेव वयमपि परस्मैपदिनः एव स्वीकुर्मः इदानीम् अत्र दृष्ट्वा वक्तव्यं स्वार्थे अस्ति अथवा प्रेरणार्थक अस्ति
एकमेकं कृत्वा अहम् आह्वयामि। भारती भगिनी आरम्भं करोतु कृपया। प्रथमं वाक्यं। कृष्णः नवनीतं चोरयति स्वयं सः स्वयं चोरयति न प्रेरणार्थकम्। तर्हि स्वार्थिक इति भवति खलु। स्वार्थिकः स्वार्थेणिच्। स्वार्थेणि कुमुद् भगिनी वदतु द्वितीयं। माया माता पुत्र्या अन्नं पाचयति, प्रेरणार्थे भवति। उत्तमं। प्रेरणार्थके नीच् भवति। माता स्वयं पाचनं न करोति, पुत्री पाचनं करोति, अतः प्रेरणार्थक निजं भवति। प्रेरणार्थे। इदानीं पद्मावती भगिनी वदति वा? तृतीयं। yes sir. हस्तिपकः गजेन कदलीफलं खादयति। ओके सर, हस्तिपकः खादयति गजेन। I think it प्रेरणार्थः। उत्तमं। It made the प्रेरणार्थक। gajam eat that. महोदय हस्तिपकः किं भवति? महावत जो एलिफेंट के ऊपर में बैठ के उसको कंट्रोल करता है ना, महावत हिंदी में बोलते हैं। सारथी। हाँ, सारथी घोड़े के ऊपर बैठता है उसको सारथी बोलते हैं। Who controls the हाथी के ऊपर में elephant? जो Who controls the elephant? वो कंट्रोल से एलिफेंट। ड्राइवर। Driver अभी नहीं। In Tamil we say हस्तिपकः। हस्तिं पालयति पोषयति इति हस्तिपकः। अस्तु, काम् आह्वयामि? कृपया वीडियो उद्घाटयन्तु। अहम् आह्वयितुम् इच्छामि सर्वेभ्यः, परन्तु ये जनाः शक्नुवन्ति चेत् कृपया उद्घाटयन्तु। पूर्णिमा भगिनी भागं वोढुम् इच्छति वा? आं महोदय। चतुर्थं वाक्यं। पिता कोपेन पुत्रं ताडयति स्वार्थे। उत्तमं। केन कारणेन स्वार्थे अत्र? कारणं पिता स्वयमेन पुत्रस्य ताडयति। उत्तमं। पुत्रं अत्र ताडयति। कोपेन इति दर्शितम् अस्ति, तृतीया विभक्तौ अपि अत्र अस्ति खलु। किन्तु विशेषणम् अस्ति खलु कोपेन। That is what I was trying to ask you. Okay, now if I wants to say mother makes the father beat the child, कथं भवति? प्रेरणार्थं। वाक्यं कथं भवति वदतु। माता पितुः पुत्रं ताडयति। पितुः न, माता पित्रा कोपेन ताडयति। पुत्रं ताडयति। So the one who is beating actually will be in Tritiya or Dvitiya, as the case may be. But the Preraka Karta, who is doing the Prerana Dadati, it will be always in the Prathama. So we have to just do it. So Mata in Prathama, Pita who is actually beating his son, this will be in Tritiya here. Mamata Sharma Bhagini. पंचमं वाक्यं। गृहिणी गृहं मार्जयति स्वार्थेन। स्वार्थेन। उत्तमम्। अनन्तरं सविता जी। सविता जी। गृहिणी सेविकया गृहं मार्जयति। दिस् इस् प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक। ओके, उत्तमम्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे इति मन्ये? आं महोदय। The difference between Swartha and Prernathaka. It has to be very clear. Astu, this is the Uttar answers we already know. So now the Rupani Katham Bhavati. Here I have mentioned some Sutrani. Okay, you don't have to learn the Sutrani, nor you will be asked the Sutrani. It is just for your knowledge. So first is the Vriddhi Bhavati, Ata Upadhayaha. So what is Ata Upadhayaha?
Can anyone tell me what is Upadha? Except Well- Bhavani Bhagini. That last but Upadha. one letter. Alovantara Upadha. Alovantara. Hala. Not Zalovantara. अलोन्त्यात् पूर्व No, Alovantiyat Purva Upadha. So, the last but one will be have a Vruddhi. Is it been an Akara? It will be converted to Akara. Only for the Rasva Akara. Mind that it is A, not any other Swara. Ataha ata upadhayaha. उपधायाम यदा ह्रस्व आकार अस्ति चेत् तस्य आकार भवति. पठति पाठयति. अत्र पश्यतु पठ इति धातु अस्ति पकार अकार ठकार. अत्र उपधायाम आकार अस्ति. सो तत्र आकार भवति. पाठि इति नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति. पाठि. नयति. इकारः आगच्छति तत्र पाठी थी. हाँ तो वो तो नीच का ई जुड़ेगा बाद में. मैंने अभी खाली उदाहरण दिखाया है. नयति नाययति. पतति पातयति. हसति हासयति. पठति पाठयति. नयति नाययति. पतति पातयति. हसति हासयति. महोदय शब्दस्य नूतन शब्दस्य निर्माणं कथं भवति? पठ को कैसे ई होगा तो पाठी हुआ. बालकेन मित्रं पातयति. अच्छा वाक्य पूछ रहे हैं क्या आप? शब्दस्य फॉर्मेशन कथं भवति? निर्माणं पातयति. किं प्रक्रिया अस्ति? हाँ प्रक्रिया वयम् आगच्छामः. चिन्ता मास्तु. पातयति पातयतः पातयन्ति मे बी. एक मिनट. अत्र this will nayati will be coming into the last one. Okay, I'm wrongly put it here. The original dhatu is ni. So first, if in the upadha there is a hasva akara, it will be converted to akara. There are exceptions, but general rule is this: hasva akara, akara. Mind that in the tadhita we have learnt about the adi vruddhi. Here it is not an adi vruddhi, it is in the upadha. There is a difference. In the tadhita it will be an adi vruddhi, first swarasya prathama swarasya vruddhi. Here it is the upadhayam. Yada akara asti chet akara bhavati. Yada svaranta dhatavah santi. Svaranta ajanta dhatavah santi. Tesham vruddhi bhavati. Achoy niti iti sutran. Achoy niti iti sutrena acha यदा अणित यत प्रत्यय परे भवति विषय वृद्धि भवति. सो कृ धातु अस्ति चेत् कारयति. धृ धातु अस्ति धारयति. स्मृ स्मारयति. नी नाययति. All these are ajanta dhatu. Ajanta is swaranta. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? Any problem? स्वरान्त अस्ति चेत् इकारः अस्ति अन्ते. स्वरान्त अस्ति चेत् तस्य वृद्धि भवति. ई के जगह पर ऐ हो जाएगा. वृद्धि कौन कौन सा वर्ण होते हैं वृद्धि में? आदो आदो नहीं, वृद्धि संज्ञक इकारः वर्ण. अस्ति चेत् इकारः वृद्धि
वृद्धि संज्ञकाः वर्णाः के और आ आई औ। औ और जब ऋकार के साथ में जुड़ेगा तो आर का अर नहीं, अर होने से गुण आदेश हो गया, ये वृद्धि आदेश है तो आर। ये क्रू जो है उसमें धातु तो डुक्रिय है ना, तो हाँ, क्रू तो कैसे हो गया? फाइनल फॉर्म तो क्रू है ना, अभी क्रू ही हिसाब से करते हैं, डू चुटू को निकाल दिया हम लोग ने। ओके, हाँ ये हम लोग का यूजेबल फॉर्म यही आता है। ओके। जैसे नी धातु है तो उसका भी ओरिजिनल फॉर्म णीय है, णीय णीय प्रापणे, अणकार दीर्घ इकार ञकार, but after each संज्ञा and the सत्वादि कार्याणि it will be नी only. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? समझ में नहीं आता है तो पूछिए मुझे। Ajanta dhatu, still don't understand the concept. Ajanta is a स्वरांत धातु ending with a swara vowel. कृ इति अस्ति। ककार ऋकार, ककार ऋकार, ऋकार is a swara. Oh, we have to take only the dhatu form, not the dhatu, not the karoti, no, not the karoti one. The original dhatu, which is the ajanta asti vana. स्मृ धातु। Now I understand. Idanim So here I have written the dhatu. No, I confused it with the Pratama thing. Purusha first one. प्रश्नः आसीत् वा कस्यापि? नयति आपका कोई क्वेश्चन था? नी धातु, नी धातु का है ना, अणी उसका रूप था, अणी दीर्घ इकारांत है, अणी अणी नहीं, अणी दंत नकार, ये उसका ओरिजिनल रूप है। हाँ, पहले हलंत्यम से यकार की संज्ञा होगी, बाद में हो नहा से णकार का नकार होगा, ठीक है? तो नी एव अवशिष्यते। अजंता धातु you said it is वृद्धि, can I say आदि वृद्धि हो गया? नॉट आदि वृद्धि, अजंत में है, अजंत में ही वृद्धि होगी ना, जो लास्ट में स्वर की ही वृद्धि होती है, उसमें आदि वृद्धि नहीं होगी। अजंत धातु में वृद्धि और गुण किसको होता है? केवल स्वर को होता है, और इसमें टू बी ऑनेस्ट इगंत को होता है। इगंत को ही स्वर और वृद्धि होती है। एक में हाँ, पद्मावती भगिनी वदतु। only becomes adi vruddhi, not the first. Here only one swara. So there is no question of first and here we should not call it by that name. Because I was thinking this is also adi vruddhi. No, this is not. That is why I said that this is first is a upadha. Yada upadhayam hrasva akara asti tatra akara bhavati. So it was in upadha. This is achoniti as with the ending. Ante yah swara asti tasya vruddhi bhavati. तो धातु में एक ही स्वर होगा अकार, तो उसका आकार हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। हाँ, ओ स्वर कहाँ होगा? ह्रस्वर अकार उपधा में होना चाहिए। हाँ, तो एक ही वर्ण का धातु होगा तो उसमें तो एक ही वर्ण का धातु में कहाँ से होगा बताइए? क्रू का कार हुआ ना। कौन सा? वो धातु तो पितृ में दो वर्ण है ना। हाँ, त्रु में भी दो वर्ण है, एक तकार है और कृकार है, दो वर्ण है। एकाच धातु है, उसको उदाहरण मैंने बताया, धातु नहीं है। आप पुनः बताइए ना जरा ठीक पड़ेगा मुझे समझने को। ये नयति है, इसका ओरिजिनल रूप क्या हुआ? णी। आफ्टर इत संज्ञा एन सत्वादि कार्याणि णी करके उसका रूप आया। णी से हम लोग ने उसको वृद्धि आदेश किया। णी की वृद्धि, इकार की वृद्धि क्या हुई? आई।
तो नई हो गया, ठीक है। नहीं, हाँ मैं लिखूं, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है। नी नहीं, है, ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पर ई जोड़ा, हाँ तो उसके बाद में क्या हुआ? ईकार ऐकार नहीं ऐ हुआ आगच्छति। और ई आया, ठीक है। अब कौन से संधि सूत्र लगेगा बताइए? केशव वया वाय। हाँ, तो क्या होगा? यहाँ पर नाय, नहीं होगा, नाय सॉरी, यहाँ पर तो उसका नाय होगा। नी हो जाएगा, सॉरी मेरा गलती, यहाँ पर नी हो जाएगा, ठीक है, नी दंत होगा। नकारस्य आई होगा, आई। हाँ, सो नाय, नहीं 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 होगा। और बाद नाय में नाय, नाय नाय और ई है यहाँ पर। आम आई आय नाई हाँ, तो नाई नाई, अत्रापि नाई नाई ये नया धातु हुआ। आम अब उसके बाद में हम लोग लेते हैं, तो नाई प्लस शप लकारस्य प्लस शप टिप। टिप बराबर। अब यहाँ पर कौन सा, इसमें भी नाई में जो पढ़े हैं उसको मैं बोल देता हूं। इसमें गुण होता है, तो नाये हुआ, सार्ध धातु आर्ध धातु कयो हो, उससे गुण आदेश होता हो, प्लस प्लस योगति, फिर एचो या वह लगेगा, नाय नाय योग ऐ योग अ योगति, ऐ योग अ योगति, नाययति। हाँ, नाययति, ठीक है, लिखा मैंने। वर्णमेलन में अत्र ऐ हाँ, अत्र वर्णमेलनमेव अस्ति। न महोदय, ऐ इति लिखितवान् किल, अत्र हलन्त्य अस्ति किल। नाई इति रूपं भवति। न न न अन्तिमे नाय योग ऐ योग अयोगति किल। यकार हलन्त भविष्यति। हाँ, आकार हलन्ति तो है। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। क्षम्यताम्, इदानीं दृश्यते, पूर्वं न दृष्टम्। It was underlined as this, so it was not clearly. क्षम्यतां महोदय। So this is नाययति। वर्णमेलनेन नाययति भवति। अवगम्यते? How this रूपकम्? So this prakriya is, you are not supposed to know. This is, it will confuse you. Just keep the final word in mind. Yeah. Now upadhayam महोदय यदा, किंचित अधः करोतु, अहं स्क्रीनशॉट नयामि। अब मैं भेज देता हूँ, मैं भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेजूंगा, आप चिंता मत करिए, पीडीएफ भेजूंगा, आप अभी खाली सुनिए। इदानीम् इच्छामि। बहु सम्यक् अस्ति महोदय, बहु लीजिए। अस्ति, अहं कृतवती। अहं महोदयस्य व्याकरण कक्षा इच्छामि, चलति महोदय? ना, मेरा संज्ञा प्रकरण का 15 क्लासेस हो गया आगे, बाद में ये अभी कोविड का आ गया, इसलिए अभी टेम्पररी होल्ड पर है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर से कक्षा शुरू होगी। जब होगा तो स्मारयतु महोदय। हम मैं तो ग्रुप में भेजूंगा ही, आप ग्रुप में हो तो आप आ जाइएगा। निश्चयेन अहं प्रार्थयामि। मयापि। हाँ, मामपि, मयापि नहीं, मामपि, मां स्मारयतु, मां मया श्रावयतु नहीं, स्मारयतु, ठीक है। अब लोग पहले में देखा था, उपधायाम यदा ह्रस्व आकार अस्ति तस्य दीर्घ आकार भवति, वृद्धि आदेश भवति। परंतु यदा उपधायां लघु इक् अस्ति, इक् इत्युक्ते के वर्णाः भवन्ति? इक्, इ उ ऋ, इ उ ऋ। सर्वेषाम् उत्तरं भवानी भगिनी एव ददाति। I won't rill rick. नहीं, मां न पृच्छति, अहं किं करोमि? भवती तो स्वपिति, अहं किं वदामि। महोदय, एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि।
अहं किमपि वर्गं गच्छामि तो तत्र कापि वा कोऽपि मम मह्यं न पृच्छते, वक्तुं न अवसरं ददाति अवकाशं न ददाति भवानी भगिनी मास्तु, भवानी भगिनी मास्तु, तदेव उच्यन्ते, सर्वे सूच्यन्ते। अहमपि छात्रा अस्मि किल। न भवानी भगिनी बहु उच्चतमा छात्रा अस्ति। वयं तु केवलं पठामः अत्र। न एक विषयं वक्तुम् इच्छामि। तमिळ् भाषायाम् एक वाक्यमस्ति, கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலக அளவு इति। अव्यार् नाम्नी कवयित्री आसीत्, तस्या उक्तं whichever we have learnt is a small amount of मुट्ठी भर जो मिट्टी होती है तदेव अस्ति। क्षम्यतां महोदय। नहीं, यथा भगिनी सर्वं जानाति एतस्य वर्गस्य विषये, यदा भगिनी व्याकरणं पठति, पाणिनिशास्त्रे अपि निपुणा अस्ति, अतः अन्येभ्यः अवसरं दातुम् अहं प्रार्थये। ये नूतनाः सन्ति तेभ्यः अपि अवसरं ददातु कृपया। उचितमस्ति, परन्तु अहमपि नूतनं विषयान् पठामि किल। भवत्याः कृते तु नूतनं विषयः नास्ति खलु, मया सह एव पठितवती आसीत्। न क्षम्यताम्, भवान् चालयतु। उपधायां ह्रस्व अकार अस्ति चेत् तस्य वृद्धि आदेश भवति। प्लीज नोट that there is no वृद्धि संधि here. This is an आदेश or replacement of hrasva akar with akar. There is no sandhi here. Okay, keep this in mind. There is a, if I say vruddhi, someone always doubts where is the sandhi here. There is no sandhi. This is an upadesha for replacement of one word, one सन्धि word, मध्ये अपि आदेशः भवति महोदय। तद्वतेव अत्रापि एव आदेशः अस्ति। Replacement of hrasva akara with akara, that is an vruddhi adesha. So now upadhayam hrasva akara asti. Idanim upadhayam yadi hrasva ik asti, I, U, R, त्रयः वर्णाः एव, I, U, R. ऋकार सामान्य रीत्या वयं न प्राप्नुमः, अतः मया न स्वीकृतम् अत्र। I ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, एवं ह्रस्व ऋकार उपधायां सन्ति चेत् गुणादेशः भवति। तस्य सूत्रमस्ति पुगन्त लघुपधस्य च। पुगन्त लघुपधस्य च। लघु उपधायां ये इक वर्णाः सन्ति तेषां गुणादेशः भवति। Puganda iti Puganta is a special thing where there is an agama of a pakar. It's called pugagama. So yasra pakara ante jayate, say puganta. After some time we will find some words where there is an agama of a pakara at the end. So in that case, or in the upadha laghu upadha bhavati. In that case, ikasya ikaha gunadesha bhavati. Puganta is nothing but pakarasya agamaha ante yasya bhavati saha te dhatavah vishishta dhatavah santi tesham krute ayam sutram. Parantu here, but it is not in likati, not applicable here. We have to okay. Look up for the laghu upadhasya. We are concerned with the laghu upadhasya, not the puganda part now. We are concerned with the laghu upadhasya cha. Laghu upadha yasya bhavati tasya. So please keep in mind, whatever is the guna or vruddhi adesha, it will always be of the ik varna, not anyone else.
no any other letters. Only ikavarnasya eva gunavruddhi adesha bhavati. Eko gunavruddhi iti sutra. Eko gunavruddhihi. एकवर्णस्य एव गुणः तथा वृद्धि आदेशः भवति, अन्येषां न. So whatever changes will be there, it will always happen in the ikasthane. So likha धातुं वयं स्वीकुर्मः. तत्र उपधायां ह्रस्व इकारः अस्ति. पश्यतु अत्र लिख इति धातु अस्ति, अत्र ह्रस्व इकारः अस्ति खलु, ल I. So this is the final form. La, I, kha. If you do the anupurvi, so this will be the formation. Laku ubadha khakara atyastyantra ante tasmat purvam laku ikasti. Tasya ekara adesha bhavati. Likhati lekhayati. Likhati lekhayati. So dhatu is likha, but the hrasva ikara is converted to ekara, lekhayati. Here also there is no gunasandhi, but gunadeshaha, replacement of ikara with a gunavarna called ekara. Akara, okara and ekara are the gunavarnas. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय. So क्षिपति, क्षिप धातु क्षेपयति. मिल धातु मिलति मेलयति. इ ए. क्षिपति क्षेपयति मिलति मेलयति. यदि उपधायां लघु उकार अस्ति, ह्रस्व उकार, तस्य ओकार आदेश भवति. तुष्यति, तोषयति, क्रुध्यति, क्रोधयति, कुप्यति, कोपयति. तुष, तोष, क्रुद्ध, क्रोध, कुप, कोप. अवगम्यते वा? These are all last but one. So upadhayam. Mind that. Upadhayam. उपदा शब्दस्य अर्थं किं महोदय? Last but one letter. So if we say here likha, how do we do the how do we break the particular word? L, ante la, I and kha. La, I, kha. This is how we break the word lik, right? So the khakara is at the end. It's called anta. So this is a halanta shabda, halanta dhatu. Hala isukte vyanjanam. So this is an halanta dhatu, likha. Tasmat tasya upadhayam kim asti hrasva ikar. तस्य इकारस्य एकार आदेश. उपधा हम कहां पर देखते हैं? जो धातु हमेशा वो हलंत धातु होती है, उसी में हम लोग उपधा देखते हैं. स्वरांत धातु में उपधा नहीं देखते. हम लोग स्वर जो अंतिम स्वर है उसी को हम लोग वृद्धि कर देते हैं. हमको देखना जब धातु हलंत होती है तो उसके पहले उपधा होती है या नहीं होती, उसको हमको देखना पड़ता है. यदि वो उस उपधा में लघु इक है, ई उ र लघु मतलब ह्रस्व है, उसको हमको गुण करना है, गुणादेश होगा. प्लीज कीप दिस माइंड. ओके. तुष तोषयति, क्रुद्ध क्रोधयति, कुप कोपयति. अब उपधायाम यदा लघु ऋकार अस्ति, ह्रस्व ऋकार, तो अर इति गुणादेश भवति. नृत्यति, नर्तयति. अत्र पश्यतु नृत्य, अत्र ऋकार उपधायाम अस्ति. दिस इज अ तकार इज द एंड एट द एंड. सो दिस इज एन हलंत धातु. ओके. कृषति,
कर्षयति, सृजति, सर्जयति. So original dhatu is krush, srij, nृत. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? So see, I don't have to ask every time if I would have seen your faces. See, I can see faces of hardly 2 to 3 people or maybe 8 people. So then every time I have to ask whether you understand or not, because I can't see your expressions. That is why I'm asking you repeatedly. Understood. So we have learned upadhayam yata hrasva akara asti tasya pruthvi adesha bhavati. अत्र पश्यन्तु. उpadhayam pathati pathayati, patati patayati, asati hasayati. उpadhayam hrasva akara. यदा अजंत धातु अस्ति, तेषाम अजंत धातु अस्ति, we have come a separate agent dhatu also. Okay, so here it is kru karayati, dhr dharayati, smra smarayati. That also has a vruddhi adesha. महोदय अजंत इत्युक्ते स्वराः अस्ति, णिजन्त इत्युक्ते देखिए णिजंत तो मैंने आगे ही बताया था. णिजंत जो णिच प्रत्यय जिसके अंत में होता है वो णिजंत हो गया. अब स्वर होगा जिसके अंत में वो स्वरांत होगा, और हल अथवा व्यंजन जिसके अंत में होगा वो हलंत होगा. ठीक है ना. जैसे लिख धातु है, वो खकार क्या है, स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन. हाँ, तो वो व्यंजनांत धातु हो गई, या हम लोग संस्कृत में बोलेंगे तो हलंत धातु हो गई. ठीक है. अजंत धातु का वृद्धि आदेश होता है. वृद्धि किसमें होती है फिर भी आप समझ लीजिए, जो इक के स्थान पर ही वृद्धि होती है. अन्य स्वर होता है तो वृद्धि नहीं होगी. अब ध्यान से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं गुण और वृद्धि हमेशा इक के स्थान पर होगी, एक्सेप्ट यहां पर उपधायाम ह्रस्वकारे स्थाने वृद्धि आदेश. बट हियर एवरी टाइम इट इज a vruddhi for all. It always be an igant dhatu. If it is at the end, it can be either a hrasva or a dirgha, ik varna. But if it is in the upadha, it has to be a hrasva swara. For that the guna will happen. But in the Swaranta, it can be either Hrasva or either Dirgha. It doesn't matter. So, likhati kara gunadesha ugachati gunadesha abhavat. Da anya swaraha santi chet khadati khadayati. There is no change. Akara asti, no parivartanam na bhavati. Kridati क्रीडयति, धावति धावयति, प्राप्नोति प्रापयति, कूर्तते कूर्दयति, वेपते वेपयति. So these see kurdate and vepate are atmanipadi dhatu, but we have attached an anich pratyaya, so it's become ubhayapadi dhatu. Kurdayati kurdayate, vepayati vepayate. पूर्वं महोदय उक्तवान् तत् अत्र दृश्यते. शंका समाधानम् अभवत्. अनेन अहं वारं वारं वदामि, शनैः शनैः वर्गे अग्रे गच्छामः, वर्गस्य अन्ते सर्वेषां समाधानं भविष्यति. खादति खादयति, क्रीडति क्रीडयति, धावति धावयति, प्राप्नोति प्रापयति, कूर्दते कूर्दयति, वेपते वेपयति. द्वयोः भवितुम् अर्हति. वेपते वेपयति. So this is a standard. This is not only for the Atmanepadi. Even if it is a Parasmaipadi,
Now please note, because we have used anijanta, the dhatu itself is changing. So it no longer remains to be a parasmipadi or atmanipadi. It will always have a ubhayapadi rupam. Always Because we have created a new dhatu. Yeah, so it does not belong to any gana also now. So if you have seen that, because when I have given a dhatu, I was doing a prakriya, I have directly added shapa. Because shapa is itself added to the kartari shabd bhuvadi gana, not anywhere else. But here, what, because it does not belong to any of the gana, we by default it is kartari shap. If you are writing as a kartari vakyam, so by default it is shap. So like this only we get new dhatus. Yeah. To give different meanings. Yes, that is what I was telling. That is why Panini has given 12 sanadi pratyayas. Sir, Mahodaya, Vadatu. Vepate shiver as well as sweat, no? Sweat also we can say. Yeah. So each dhatu have many meanings. It is not related to just one way. We take 1 or 2 meanings at the max. If you want to have a detailed, if you have a detailed knowledge, so we can have a, it's called different dhatu book itself. It has given so many meanings. महोदय कस्मिन् गणे य आगच्छति नवमे गणे अथवा अष्टमे दिवादिभ्यश्यन् दिवादि गणे अत्र निजन्ते आगच्छति भ्रमं भवति कथं निष्कासयामः भ्रमम् आय निजंत में आय होगा उसमें सिर्फ य है उधर सिर्फ य है यहाँ आय है तो ये फर्क है प्रयत्नेन शंका समाधानं भवति स्वप्रयत्नेन निश्चयेन I think only in the 10th gana that there will be aya. तो यहाँ पर जो दिवादि गण का सबसे पहले धातु है दिव धातु है, तो उसका रूप क्या बनता है? दिव्यति। दिवयति नहीं बनता है, दिव्यति बनता है ना। और शिव्यति बनता है, शिव धातु का शिव्यति बनता है, पर अय नहीं बनता है, शिवयति नहीं बनता है यहाँ पर। तो ये हमको देखना है शिव्यति है या शिवयति है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट? सो अजंत धातुना वृद्धि आदेश भवति त्रु-तारयति, कृ-कारयति। सो यहाँ पर रकार को आर आदेश हुआ, वृद्धि आदेश, सो तार। अत्र केनापि मया पृष्टं नृत्य एतयोः नार्तयति केन कारणेन न भवति? Because takara is at the end. This is an halant dhatu and rakara is at the updha, not at the end. Had it been at the end, it had been a na as a r, vruddhi. But this is at the updha. So this will be nartayati. There is a guna adesha, not a vruddhi adesha. Drish dhatu api same Mahodaya. Drish dhatu. Darshayati. हाँ, दृश् धातु दर्शयति, समान गुणोदेशेव। टाइम हो गया क्या? यू वांट टू कंटिन्यू? समय जाता महोदय। Yes, sir, we can continue. अग्रिमे सप्ताहे शांति मंत्रम इदानीं। So I was just starting coming to the रूपम also, अभ्यास एव। अस्तु, स्थापयामः, चिन्ता मास्तु। ये शांति मंत्र